कैसे हैं आप सब? It's me Simi and welcome to another super exciting episode of La Maison L'Oréal Paris, your one stop for everything related to makeup. So subscribe करना ना भूलें so that you're updated with all of our makeup tips and tricks, and also hit on the bell icon which is right next to it so that आप La Maison L'Oréal Paris का एक भी episode ना miss कर पाएं. So I hope you guys are doing good during this social distancing phase of our lives, and we're only stepping outside if it's absolutely necessary, and that too wearing a mask. So our eyes are the only thing that's visible right now, and in today's video I'm going to show you how you can highlight your eyes with an easy cat wing liner. And इसको करना काफ़ी आसान है, सिर्फ 2-3 products चाहिए आपको इसके लिए, and that's it. You are ready with your mask makeup. And yeah, अभी क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम भी है तो आप आराम से इसको बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. ओके, सो आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपना बेस मेकअप करना ना भूलिए, जिससे कि आपका आई मेकअप और भी ज़्यादा पॉप होगा. सो आज मैं यूज़ कर रही हूँ L'Oréal Paris का Infallible Full Wear Concealer in the shade Amber. So this is a full coverage concealer which will help in brightening my under eye, at the same time covering my imperfection and all of the blemishes on my face. So I'm going to use the wand directly on my face, and I'm going to just dot a little bit underneath my eye, and also on all of the spots where I have slight imperfections, blemishes, acne scars, etc, etc. और मेक श्योर कि आप अपनी आईलिड को भी थोड़ा सा कंसील कर दें. और अब आप इसको ब्लेंड करने के लिए मेकअप ब्रश यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे अपनी फिंगर्स यूज़ करना ज़्यादा पसंद है. सो मैं फिंगर यूज़ करूँगी और इसको धीरे धीरे अपनी स्किन में ऐसे टैप करूँगी सो दैट ये प्रोडक्ट अच्छे से मेरे स्किन में सेटल हो जाएगा, एंड ईजीली स्प्रेड भी हो जाता है विद योर फिंगर्स, बिकॉज आपके फिंगर्स में जो हीट होती है वो एक्चुअली प्रोडक्ट को ईजीली स्प्रेड करने में हेल्प करता है. Okay, so we're done with the concealer, and now moving on to the eyes. So I'm going to be using the L'Oréal Paris Super Liner Gel Intensa eyeliner for that. ये eyeliner काफ़ी pigmented है और transfer proof भी है, smudge proof भी है, so it's going to be perfect as it's going to last you all day long. And now I'm going to dip my brush into this. Now the brush that I'm using is actually a very thin brush. आप एक ऐसा angled thin brush ले लीजिए जिससे कि आपको cat liner बनाने में काफ़ी आसानी होगी. So I'm going to dip it into the liner. ओके, सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी राइट आई से, और इसमें मैं आपको हैक नंबर 1 सिखाऊंगी. अगर आप ऐसा वाला ब्रश यूज़ कर रहे हैं आपको बहुत 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 इजी हो जाएगा ऑलरेडी आपकी विंग बनाने में, क्योंकि मैं इससे एक स्टैम्प बनाऊंगी. और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने लोअर लैश के कॉर्नर से. सो बेसिकली जहाँ पे आपकी आईज की कॉर्नर होती है वहाँ से मैं अपने ब्रश को रख के बस एक ऐसे लाइन बना दूँगी लाइक दैट, एंड फिर इसको थोड़ा सा डार्क कर लें. ऐसे. And then I'm going to go back in with my brush, and this time I'm going to start from the center of my eyelid like this. Now this part can be a little difficult, but you guys can keep practicing and you'll get it. So अब मैं basically अपनी center of my eyelid से इस लाइन को कनेक्ट कर दूँगी. तो धीरे धीरे अपने ब्रश को उस लाइन से जॉइन करना है लाइक दैट. एंड देन ये जो गैप है इसको मैं फिल कर दूंगी अपने आईलाइनर से, सो दैट इट लुक्स रियली नाइस एंड थिक एंड डार्क एंड लाइक अ प्रॉपर कैट लाइनर. एंड अगर आप ऐसे करते हुए कुछ मिस्टेक कर भी रहे हैं तो आप उसकी टेंशन ना लें, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कि आप अपनी मिस्टेक्स कैसे करेक्ट कर सकते हैं. सो अभी के लिए मैं सिर्फ इसको अच्छे से कवर कर रही हूँ और प्रॉपरली फिल कर रही हूँ with the gel liner. And once the corner part of my eyes are done, I'm gonna go back in, take a little bit more of that gel liner onto my brush, and this time I'm gonna start from my inner corner
and basically connect it to the center portion of my eyelid. That's it. And now you just want to make sure that there are no gaps and it's like completely covered and it's jet black, because that's the whole idea of a cat wing liner. It's supposed to be slightly thicker than your normal liners. And इसको अच्छे से fill कर दे. एंड आप इसकी थिकनेस अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, अपनी आई शेप के हिसाब से, आपको जैसा पसंद है. अगर आपको इसको ज़्यादा थिक करना है, यू कैन मेक इट थिकर. इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द थिकनेस, यू कैन डू दैट एज वेल. So I'm keeping it slightly medium, so it's not too thick also, it's not very very thin at the same time, so it's slightly somewhere in the middle. So now, as you can see, I've made some mistake here on the wing part of it. So for that, I'm gonna take a little bit of makeup remover on a Q-tip. So I'm taking a Q-tip and I'm gonna dip this into a little bit of makeup remover, and then going back around the area where I made that slight mistake, and I'm gonna correct it. So just use a very gentle hand while you're doing it, and that's it. And this will also help you in actually sharpening your wing. So if you've slightly, you know, made your wing too thick or something, you can go back in with your Q-tip and इससे आप अपनी wing को thick और sharpen भी कर सकते हैं. So that's the best part about it. So don't worry if you've made a mistake, you can always correct it with your Q-tips. Alright, so I'm done with this eye and now moving on to the other eye. इसके लिए मैं आपको एक सिंपल दूसरा आसान तरीका दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको एक तरीका ऑलरेडी बता दिया है. तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ, जिससे कि स्टैम्पिंग टेक्निक बोलते हैं. So I'm going to be using the same gel eyeliner that I was using earlier and the same brush. And again I'm going to take a little bit on my brush. And to make sure कि आपके दोनों wings match करें, I'm going to start from the bottom part of my lash, just like how I started on the other eye. So I'm going to create small, basically lines, like small dots. Like that. And I'm going to go back in on the center of my eyelid again. I'm going to create small dashes. Something like this. So basically आप एक outline बना रहे हैं जिसको आप later connect कर देंगे. And that's it. This is the final dash. So it should look something like this. And then I'm gonna just so now it's very simple actually. Now I'm just gonna connect all of this. And that is it. मेरा wing part हो चुका है. And now I'm gonna go back in towards the center of my eyelid. एंड आई थिंक ये काफ़ी आसान तरीका है, बिकॉज इससे आपकी विंग ईजिली बन जाएगी और एकदम परफेक्ट भी बनेगी. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी दोनों विंग्स एक्चुअली काफ़ी सिमेट्रिकल है और दोनों मैच भी करिए. सो एक ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि दैट्स एक्चुअली द बेसिक प्रॉब्लम दैट वी ऑल फेस विद कैट विंग लाइनर्स. एंड अगर आप एक बिगनर हैं और अगर आपको देखना है कि आप कैसे ईजिली अपनी कैट विंग और अपने विंग लाइनर्स मैच कर सकते हैं, सिमेट्रिकली मैच कर सकते हैं, तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है विद आनंद. जस्ट क्लिक ऑन दिस link right here and you guys can go watch that video. It's actually a very beginner friendly video.
एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा हैक्स भी मैंने शेयर किए हैं. ओके, सो आई एम डन विद माई कैट विंग लाइनर एंड नाउ टू मेक माई आईज पॉप अ लिटिल बिट मोर आई एम गोना यूज अ मस्कारा. सो द मस्कारा दैट आई एम यूजिंग टुडे इज बाय लॉरियल पैरिस. दिस इज द वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा. इसको यूज़ करने से पहले मैं एक्चुअली एक कर्लर यूज़ करूँगी जिससे कि मेरी आई लैश थोड़े कर्ल हो जाएंगे. Then I'm gonna start from the bottom of my lashes, basically starting from my roots. So आप इसको root से start करके बिल्कुल edge तक लेकर जाएं अपने lashes के, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा volume और length भी मिलेगी. So I'm gonna repeat that to the other eye as well, starting from the bottom part of my lash, like from the roots. इसको wiggle करके top तक लेकर आए and then towards the bottom lashes. Alright, so I'm done with my eye makeup and now I'm just gonna dab on a little bit of lipstick because it kind of feels incomplete. So I'm using the L'Oreal Paris Rouge Signature Liquid Matte Lipstick and the shade that I'm going for is 105 Eye Rule. So ये थी मेरी easy cat wing liner look. I hope you guys enjoyed this video and comment करके मुझे please बताएं कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कैसे लगे मेरे hacks, and अगर आपके पास कोई और tips और tricks हैं तो वो भी मुझे please बताएं so that I can try it out for you. And with that, it's a wrap. All of the products that I've used in today's video are mentioned in the description box below. And जाने से पहले subscribe करना ना भूलिएगा and also hit on that bell icon which is right next to it so that you are updated and notified every time we upload a new video on La Maison L'Oreal Paris. And with that, it's a wrap for now. I will see you next time. Bye. Hi guys, I hope you're staying home and staying safe. I'm proud to share that L'Oreal India has taken a step towards helping our country in this time of need through their initiative called L'Oreal India Gives Back. Click the link in the description box to know more about it.